Hello student, how are you all? I'm your science teacher, DPS sir from LPM Public School Gola Bajar Gorakhpur. Student, as you know chapter 10 that is force and pressure is under revisional process in which I have explained you in my previous video about the force, what is the force, how many types of force, that I've explained you, that is the contact force and non-contact force. And in the contact force that I've already explained you about the just like push and pull, when the body comes in contact then only that force comes, that is the muscular force and frictional force and mechanical force. These three force, mechanical force, frictional force and muscular force, are the examples of contact force, which could be only applied when they comes in contact with some object. So now student, further I am going to explain about the non-contact force. So let's start student. Now student, dear student, the non-contact force I'm going to explain today. A non-contact force in any is any force applied to an object to or body by another body which is not in direct contact with each other. So, a non contact force is any force applied to an object or body by another body which is not in direct contact with it. A non contact force is applied even when there is a vacuum, that is, no any medium present there, then also that non contact force will act between two objects. So for that, the examples of non-contact force are forces due to gravity. Okay, student, the forces due to gravity. Then the like the earth, if you throw anything in the sky, it will return back to the earth's surface. That means there is a attraction force of attraction between the earth and that object. That's why the if you're throwing a ball, the ball is returning back to the earth's surface. That means a force is acting to attract that ball toward the earth's surface. But that force, the earth is not going up to catch the ball, but from far away it is attracting the ball towards the center of the earth. And this, the force which is applying here, is called the gravitational force. Next to an electric force, you can see here student, electric force. Okay, so like charges attract to each other. So if you rub any object and you bring near another object, if you rub an object, that object will be charged, and if you bring near a neutral object, that neutral object will get attracted by that charged object. Or if you rub two objects with same body, then both the object will acquire the same charges, and when these both the objects will brought closer to each other, instead of attracting they will repel, because they both have acquired the same charges, and as you know very well, the same charges repel each other, and either the opposite charge or one charged body or next uncharged body attract each other. So attraction and repulsion. Okay, this is another thing, but here you can see there is also a type of force that has been created after rubbing an object. Suppose that you have rubbed a comb on your hair, then you tore a pieces of paper and bring the comb near that bits of paper. Don't touch, don't bring very closer to the paper, just lift it above the paper up to a certain distance. You will find that the paper starts just attracting towards that comb, and this shows that the comb has been charged
there has some charge in the comb that is creating a force of attraction and the paper is get attracted. So student, here is the charge that is called the electrostatic charge. Next student, magnetic. Next is the magnetic force. Like a magnet pulling a common pin towards the, suppose that you have taken a magnet and a small bits of iron nails keeping on table, and just about a few centimeter high you bring the magnet, you will find the nail will get jumped and get clicked to the magnet, because the magnet has put a force without coming in contact from that force is called the magnetic force. So student, you can see here gravitational force, electrostatic force and magnetic force are such forces that could be applicable without coming in contact with the other body from a certain distance. Magnetic force, if we bring a magnet near some iron clips, they are pulled toward the magnet. Okay student, this is the magnetic force and this comes under the contact force. About, you can see here, take a plastic straw and cut into two equal pieces. Suspend one of the piece of the edge of the table, piece of from the edge of the table and held the thread, hold the other piece straw and rub it free with the sheet of paper. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं दो स्ट्रॉ ले लीजिए, एक को टाई करके टेबल से लटका दीजिए, दूसरे स्ट्रॉ को आप पेपर से रब करने के बाद ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ, उस पाइप का रब्ड किया हुआ कॉर्नर पॉइंट ऑफ दैट स्ट्रॉ, ब्रिंग इट नियर टू दैट सस्पेंडेड स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ आपने लटका रखा है उसके निकट लाइए, नज़दीक लाइए. You will observe the rubbed and the acquired, due to rubbing, that rubbing part of that straw has acquired a charge, and due to that charge, okay, due to that charge, that straw which is hanged on the table will get attracted toward that charge which is that toward that straw which is in your hand. Now rub the free end of the suspended straw with a piece of paper. Now again it is telling that suspended rod, that suspended straw, you rub with the same thing as you have rubbed the straw which is in your hand. Okay, now you bring both the straw near to each other. You will see instead of attracting, they are repelling each other. Means I'm just going to explain in Hindi student. Just एक प्लास्टिक का पाइप लीजिए, स्ट्रॉ, उसको हैंग कर दी, किसी चीज़ से लटका दी, धागा से बांध के. एक और प्लास्टिक का स्ट्रॉ लीजिए जिसको आप पेपर से रगड़ चुके हैं. अगर आपने पेपर से उस पर रगड़ा है तो इस पर ज़रूर कोई ना कोई चार्जेस एक्वायर किया होगा. जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा, इनमें अट्रैक्शन होगा. ओके, पर अगर आपने जिस पाइप को लटका रखा है उस पाइप को भी अगर आप सेम ऑब्जेक्ट से रब कर देंगे जिस ऑब्जेक्ट से दूसरे पाइप को आपने रब किया, तो इन दैट केस दोनों स्ट्रॉ पे सेम चार्जेस हो जाएंगे. और जब सेम चार्जेस हो जाएंगे तो ये इनके बीच में तब अट्रैक्शन के बजाय ये रिपेल कर जाएंगे. मतलब ये दूसरे दिशा में मूव कर जाएगा और ये दूसरी दिशा में मूव कर जाएगा. ओके स्टूडेंट, दे विल बोथ मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और डिफरेंट डायरेक्शन मूव करके ये शो कर दिया, जिसे कहते हैं रिपेल. इट प्रूव्स दैट दे बोथ हैव एक्वायर्ड द सेम चार्जेस. क्योंकि दोनों के अंदर सेम चार्जेस आ गए, इसलिए सेम चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट जो हैं अट्रैक्ट करने के बजाय एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं स्टूडेंट. सो हियर यू हैव सीन दैट हाउ
when both the straw has rubbed with the same type of object just like paper, they both have acquired the same charges and the straw has repelled. Now next student, gravitational force. What is gravitational force? Here you can see a boy is just throwing the fruit from the basket, and again he is collecting all the fruits is coming back to the basket. That means there is a certain force which is not seen by us, but there it is acting by for attracting all these things and collecting the basket. That is called the gravitational force. Now student, suppose that here you can see there is a magnet here in the hand of that boy, and there is few safety pins, or you can say alpin in that near it, and the boy has just brought near the safety pin, and the magnet has attracted pulled toward them. So this here you can see it is the example of magnetic force. A magnet has two poles, north pole and south pole. If we pick up the two magnet and bring either the mouth part of the south pole closer to any magnetic substance, it will attract on its both the pole. Okay, but if we will bring two similar poles of magnet toward each other, instead of attracting they will repel each other. मीन्स अगर दो विपरीत पोलों को आपस के एक दूसरे के सामने ले आया जाए तो वो उनमें आकर्षण होगा, वो अट्रैक्ट कर लेंगे। पर दो अगर विपरीत नेचर वाले चार्ज को अगर आमने सामने ले आएँ, जस्ट लाइक नॉर्थ पोल के सामने अगर साउथ पोल ले आएँ तो अट्रैक्ट कर लेंगे, पर वही अगर सेम चार्जेस आएंगे तो उन्हें वो रिपेल कर देंगे। मीन्स दोनों सटकने के बजाय दूर दूर हट जाएंगे, झटक जाएंगे, उनके बीच में गैपिंग आ जाएगी, वो सटेंगे नहीं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे फोर्स के बारे में मैंने बात किया जो बिना टच किए हुए उस पर एक्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके आगे, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर मीन्स दबाव, फोर्स मीन्स बल, प्रेशर मीन्स दबाव। सो स्टूडेंट, in this topic I will explain what would happen if you are made to stand tiptoe। अगर आपको टिप यानी कि टो के एकदम टिप यानी कि उंगलियों के भरोसे अगर खड़ा किया जाए, पूरी बॉडी का वेट आपके उंगलियों पे आएंगे, तो आप देख पा रहे हो अगर आप पूरी अपनी बॉडी का वेट उंगलियों पे खड़ा हो रहे हो तो सिर्फ उंगलियां आपके सरफेस को बहुत कम टच करेगी, और जितना फोर्स किसी कम सरफेस एरिया को टच करेगा प्रेशर उतना ही अधिक बनेगा। जब कोई फोर्स बहुत कम एरिया पे प्रभाव फोर्स डालेगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा फील होगा, और अगर फोर्स की एरिया ज़्यादा दूर में फैली हुई है तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। जैसे कि आप बगल में देख पा रहे हो, ये दोनों पैरों का इम्प्रिंट है, छाप है, जिसमें एक में पंजे की तरफ में बहुत ज़्यादा गहरा दबा हुआ है, वहीं पे दूसरे फिगर में भी पैर का ही निशान है पर उतना अधिक उसके फुट इम्प्रिंट नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट फोर्स जितना कम एरिया को टच करेगा उतना प्रेशर अधिक फील होगा, फोर्स जितना ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा उतना प्रेशर कम। यहाँ पे कम एरिया में फैला तो प्रेशर अधिक है, यहाँ पे प्रेशर का एरिया ज़्यादा एरिया में फैल गया है तो यहाँ पे प्रेशर कम है। ओके, और यहाँ प्रेशर अधिक है। सो हियर fill a flat tray with soft damp sand। कह रहा है एक ट्रे भरी है, उसमें गीली मिट्टी भरी है, नॉट गीली, सॉफ्ट सैंड और हल्का हल्का गीली, एंड स्टैंड टिप्टो ऑन द सैंड, और अपने पंजों के भरोसे उस पर खड़े रहिए। हाउ डिड यू इम्प्रिंट दैट यू मेक इट सैंड, अच्छा, नाउ स्टैंड ऑन द स्टैंड नॉर्मली। कह रहे आप नॉर्मली खड़े होइए, एंड मेजर हाउ फार इट सिंक्स, अब देखिए कितना ज़्यादा वो गड्ढा बनाता है। इफ़ द फर्स्ट
if the first case the sand will sink more, and the second case the sand will not have the deeper impression. पहले वाले में deeper impression, दूसरे वाले में deeper impression नहीं है. ऐसा इसलिए of your feet in comparison to the tip to this happens because the entire body weight is distributed. क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जो है, पहले वाले फिगर पूरी बॉडी का वेट उंगलियों पे है, मतलब बहुत कम एरिया इन कांटेक्ट पे है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा फील हुआ और इसलिए वहाँ पे गड्ढे ज़्यादा है. हाँ, ज़्यादा स्पष्ट क्लियर मालूम चल रहे हैं. पर जिस पे प्रेशर कम हो, ओके, मीन्स जो एरिया प्रेशर फोर्स जो है ज़्यादा एरिया में फैल गया है. तो ज़्यादा एरिया फैलने की वजह से वो फोर्स का इम्प्रिंट वहाँ पे हल्का रहेगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा एरिया में फैल गया तो प्रेशर कम पड़ेगा, और अगर वही फोर्स कम एरिया में है तो उसका इम्प्रिंट गहरा पड़ेगा, यानी वो प्रेशर ज़्यादा गहरा होगा. ओके स्टूडेंट,